Hi. So apart from the TOD, Tour of Duty program, which was a buzz in the newspaper, there is another induction mechanism which we should discuss and you should know, which was proposed for armed forces. So this model is inverse induction model, right? So ये कम आपने सुना होगा, ये कम चर्चा में है, न्यूज़पेपर ने इसके बारे में कम बात की है, but let us discuss this कि what is this inverse induction model, which is also a buzz nowadays, and what army as well as paramilitary forces, of course MHA is planning, right? And who was the person who actually gave this model, how this is came out. So एक general discussion कर लेते हैं इसके ऊपर, right? So what is inverse induction model? देखो, when Kargil Review Committee after that Operation Vijay was formed, they suggested some positive views as well as lacuna based on the armed forces, warfare, technologies, modernization, everything, right? So उसमें एक view था कि can't we induct आर्मी से जो रिटायर्ड बंदे उनको पैरामिलिट्री में जाते हैं, और ये ट्रेंड है भी कुछ जगह कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, राइट? बट दिस इनवर्स इंडक्शन का मतलब ये है, वी आर प्लानिंग कि करंटली जो जॉब में है, जो सीएपीएफ में, एनी पैरामिलिट्री फोर्स में, राइट, सीएपीएफ जॉब में है, उनको आर्मी में 7 साल के लिए वी शुड गिव देम, और यू कैन से अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग, जॉब एक्सपीरियंस इन armed forces for 7 years. Now they will be better prepared in comparison to the paramilitary forces. So armed forces will be far better prepared in comparison to this. तो ऐसे लोगों के पास दोनों का एक्सपीरियंस है and they can be asset. अब 7 साल आप आर्मी में लगाए, right? उसके बाद you have to back to your organization वापस. So that is called inverse induction. अभी क्या चल रहा है? इंडक्शन, कि आप रिटायर होते हैं आर्मी से, सीएपीएफ में किसी पैरामिलिट्री में मान लो आपने ज्वाइन किया, राइट? we are going with inverse induction. Now what are the benefits? The report suggests the research paper on this submitted by Lieutenant General, right? So that is by Lieutenant General Prakash Menon, doctor, of course, is a PhD, Dr. Prakash. He suggested, now he has submitted this thesis on this paper in Takshila Institute, Bangalore, which the report says that report name was Human Capital Investment Model for how we are going to generate human capital investment for national security. तो जब भी आप investment word की बात करते हो ना, you talk about optimization of the expenditure. खर्चा कम करना है, benefit ज़्यादा रखना है, optimum utilization. So what is the best benefit? Savings. The report suggested, based on the data, report suggested that by this नए जो पर्सनल हम भर्ती करते हैं उससे अच्छा इससे हम आर्मी में लगा दे, और इसके बाद जो रिटायर होते हैं या फिर जो सर्विंग है उनको हम इन होम गार्ड्स, एनडीआरएफ वगैरह में एम्प्लॉय कर सकते हैं. नाउ दिस ट्रेन्ड पर्सनस विल बी एन एसेट फॉर ऑल द पैरामिलिटरी फोर्सेस, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, सेविंग्स विल बी 6,468 करोड़ इन 15 years. तो लगभग 6,500 करोड़ इनडायरेक्टली पंजाब के लिकर बिजनेस से, साल भर में जो लिकर से जो एक्साइज आता है ना उसका डबल, राइट? इतना पैसा वो कह रहे हैं कि बचेगा, उतना तो साल में पंजाब इसका आधा कमा लेता है, राइट? So now this money is going to be utilized somewhere. Maybe of course defense का बजट है तो डिफेंस प्रोसेस में ही लगेगा, but somewhere else, some other scheme, some other plan for more induction to the lower level, or maybe some specialized post like cyber security में, या फिर जो कहते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है उसमें लगेगा. Even for the Naxalites or the internal security, different kind of warfare is required nowadays, right? So this model is called inverse induction model, जो शायद काफी न्यूज़पेपर में आज नहीं आया, right? But I am telling you, you should be ready with this. Even if you go for SSB, if they ask what is inverse induction model, because this is going to be planned. Now इसका benefit तो of course है, but नुकसान भी होने वाला है, because you know now this is unofficial. This is what I feel. हो सकता है कि मुझे जो लगता है वो गलत हो, कि number of posts in armed forces can be cut. कि भाई जब यहीं से रिक्रूट हो सकता है तो वॉलंटरी टाइप चलता रहेगा. It's a loop going on. And recruitments will be slowed down. Of course, जो पहले number of recruitment होती थी, अब शायद उतनी नहीं होती, because automation is of course a factor apart from different multiple XYZ factors. So that is what inverse induction model. I hope
this discussion had come some insight to you. Question, queries, anything you want to write, do mention at 7710548960. This is DC number. Thank you for watching this video. All the best.